हाय फ्रेंड्स। सप्लाई चेन मैनेजमेंट शॉर्ट लेक्चर सीरीज में आज हम कंपोनेंट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे। मैं मनोज कुमार राव आपको द बेसिक कंसेप्ट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में इस सेशन में समझाऊंगा। आइए जानते हैं क्या क्या कंपोनेंट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। पहला जो कंपोनेंट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट फोकस अपॉन 5 कोर कंपोनेंट्स। पहला कंपोनेंट है प्लानिंग, सेकेंड कंपोनेंट है सोर्सिंग, थर्ड कंपोनेंट है मैन्युफैक्चरिंग, फोर्थ कंपोनेंट दैट इज डिलीवरीज एंड लास्ट कंपोनेंट रिटर्न। ये 5 कंपोनेंट को मिला के सप्लाई चेन कंपोनेंट फॉर्म होता है। बेसिकली इफ यू गोज टू फर्स्ट वन, अगर पहला वाला अगर आप देखोगे प्लानिंग वाला जो है, दिस इन्वॉल्व डेवलपिंग स्ट्रेटजीज टू मैनेज रिसोर्सेज, प्रिडिक्ट डिमांड, ऑप्टिमाइज ऑल अदर सप्लाई चेन प्रोसेसेस। प्लानिंग के अंडर में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है मीट कस्टमर्स, मिनिमाइज द कॉस्ट एंड द लास्ट इज implementing the proper planning to maximize the efficiency. Second जो planning है that is components in case of supply chain management, that is known as sourcing. This component focus on selecting reliable suppliers, negotiating contract, establishing process for procurement or purchase of raw materials, then purchase of components and other necessary input which is basically used in case of production. सोर्सिंग में बेसिकली आपको सुइटेबल सप्लायर ढूंढना है, उनके साथ प्रॉपर नेगोशिएटिंग और कॉन्ट्रैक्ट स्टैब्लिश करना है। देन यू हैव टू गो फॉर दैट इज नोन एज परचेस ऑफ क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल एज वेल एज कंपोनेंट व्हिच आर बेसिकली यूज्ड इन केस ऑफ प्रोडक्शन। थर्ड जो कंपोनेंट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, it involves the transformation of raw material into finishing goods, including production planning, scheduling and quality control. जो थर्ड कंपोनेंट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, उसमें बेसिकली जो इनपुट रॉ मटेरियल सोर्सिंग से आता है उसको प्रोसेस करके फिनिशिंग गुड में कन्वर्ट किया जाता है और उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल अप्लाइड किया जाता है सो दैट क्वालिटी ऑफ आउटपुट शुड बी अचीव बाय द कंपनीज। फोर्थ जो कंपोनेंट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, दैट इज डिलीवरी और लॉजिस्टिक्स। दिस कंपोनेंट basically involve the activities related to transportations, distributions of product from manufacturer to different number of customers. इसमें काफ़ी सारे मतलब एक्टिविटीज इन्वॉल्व है। फर्स्ट एक्टिविटीज वी हैव वेयर हाउसेज, ऑर्डर फुलफिलमेंट टू कस्टमर्स एंड ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट। लास्ट जो कंपोनेंट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, दैट इज नोन एज रिटर्न और रिवर्स of goods from customer to companies. This involves managing the return of defectives, damage, unwanted product from customers, and the key activities are basically involved in case of return component. There was basically a reverse logistics is applied, and by the help of review of logistics, they can go for repair, recycle, or resell to number of customers. यही है that is the fundamental concept of component of supply chain management. वीडियो अगर आपको अच्छा लगे काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।